Hello friends, good afternoon. Today in sociology we will discuss the topic future model of industrialization. What are the models of future industrialization? There are mainly four type of models we will discuss in our video lecture. First one is the collectivist model, second one is the anarchist model, free market model, environmentalist model. These are the models which are given perspective to the industrialization. Okay. So first in this video lecture we will see only the collectivistic or the collectivist model. Okay. So this is about something and then, but as we will define what is the collectivist model. So collectivist culture emphasizes the needs and goals of the group as a whole over the needs and desire of each individual. In such culture, relationship with other members of the group and the interconnectedness between people play a central role in each person's identity. क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक मॉडल पर्टिकुलर फोकस है किस पे? पर्टिकुलर इसकी नीड एंड ग्रुप, किसी भी ग्रुप की क्या है, किसी एक इंडिविजुअल पे फोकस होता है. दैट मीन्स इट एम्फसाइजेस द नीड एंड गोल ऑफ अ ग्रुप. दैट मीन्स एक पूरे ग्रुप का जो भी नीड है, गोल है, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द एंड एवरी इंडिविजुअल. Okay, so the culture relation में जो भी culture relationship with other members of the group that are interconnected, people play the central role in each person's identity. Collectivist cultures such as those of China, Korea and Japan emphasize family and work group goals above individual needs or desires. Collectivism and individualism deeply private cultures. People simply take their culture's stance for granted. Okay? So, the collectivist is someone who lets others decide for him, who allows others to direct the course of his life, and perhaps seek comfort in not having to be independent. Okay? So collective is the center of all value and rights. Individual exists to serve the collective. The collective is more important than any person, even more important than all of the people in it. Individual's value determined by how much he serves the collective says equality of service is impossible. Equality of value is meaningless. Okay, so few common points which will define the collectivist as a social rule focus on promoting selflessness and putting the community needs ahead of the individual needs. Working as a group and supporting others is essential. ये सारे कलेक्टिविस्ट मॉडल के पॉइंट्स हैं जो कलेक्टिव, अगर ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं तो वो कलेक्टिविस्ट मॉडल होता है. पहला क्या कि सोशल रोल फोकस ऑन प्रमोटिंग सेल्फलेसनेस एंड पुटिंग द कम्युनिटी, और ये एज अ ग्रुप वर्क करता है एंड सपोर्टिंग अदर चीज़ें, दूसरों का सपोर्ट इसमें एसेंशियल है. पीपल्स आर इनकरेज टू डू व्हाट इज द बेस्ट फॉर सोसाइटी. पीपल्स को इंकरेज किया जाता है कि सोसाइटी के लिए क्या सबसे बेस्ट है. फैमिलीज एंड कम्युनिटी सबका एक सेंट्रल रोल होता है. वर्किंग इंडिविजुअली वर्क आउटपुट जो भी डिपेंड्स है वो इंडिविजुअल की एबिलिटी एंड वर्किंग कलेक्टिवली डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ द सोसाइटी.
अगर हम बात करते हैं कि वर्किंग इंडिविजुअली, कोई इंडिविजुअल वर्क कर रहा है तो इसके जो आउटपुट होगा वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स की एबिलिटी पे डिपेंड करता है। बट अगर हम बात करते हैं कलेक्टिवली वर्किंग की, तो उसका जो आउटपुट होता है वो आपका एबिलिटी ऑफ सोसाइटी। तो इस बेसिस पे अगर हम देखें तो कलेक्टिविस्ट मॉडल बेसिकली है क्या? एक ऐसा मॉडल है जिसमें जो वर्किंग कल्चर होता है एज अ ग्रुप में होता है। ओके, सो अगर हम कुछ पॉइंट देखें कि कलेक्टिविज्म के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो क्या है कि इन कलेक्टिविस्ट मॉडल देयर इज अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड यूनिटी। इन कलेक्टिविस्ट मॉडल देयर इज अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड यूनिटी। सेकेंड, रिस्पेक्टफुलनेस, टीम वर्क एंड कॉपरेशन। तो सारे एडवांटेज होते हैं, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होता है, टीम वर्क होता है, कॉपरेशन होता है। जो भी कलेक्टिविस्ट हैं वो एक्सट्रीमली सपोर्टेड होते हैं, एक्सट्रीमली सपोर्टिव नेचर के होते हैं। Everyone feels value as everyone's work is seen as equally। यहाँ पे कलेक्टिविस्ट मॉडल में एवरीवन, दैट मींस सारे लोग, एवरी इंडिविजुअल, सबकी इम्पोर्टेंस होती है, सबकी वैल्यू है, क्योंकि सबको इक्वली इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है। स्टेबिलिटी है, सोशल प्रोग्रेस एंड लिमिटेड लायबिलिटी। ये all these are the advantages of collectivist model। Okay, as there are some also drawback of the collectivist model। These drawbacks are, एक पर्सन कोई भी है वो सारे पर्सन को अदर्स को डाउन कर सकती है। That means one person can bring down many others। There is a lack of motivation, which is also a disadvantage of collectivism। Excess government control, बहुत ज़्यादा इसमें गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। इट रिक्वायर्स मेंबर्स टू पार्टिसिपेट फॉर द सक्सेस। ओके, सो दिस इज ऑल ओवर अबाउट द कलेक्टिविस्ट मॉडल। यहाँ पे हमने क्या देखा कि बेसिकली अगर हम मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो कलेक्टिविस्ट मॉडल, एनार्चिस्ट मॉडल, फ्री मार्केट एंड इन्वायरमेंटलिस्ट मॉडल होते हैं। तो जिसमें से कलेक्टिविस्ट मॉडल के बारे में अभी हमने देखा कि कलेक्टिविस्ट मॉडल क्या होता है। ठीक है, okay, so collectivist model में बाकी further next video lecture में I will give the topic anarchist model। Okay, thank you।